Today is not a day to be afraid, but a day to know the truth. Today we will not tear open these seals. रुकिए, अगर आप एक महिला हैं या आपके घर में माँ, बहन या पत्नी हैं, तो इस वीडियो को छोड़ने की गलती भारी पड़ सकती है। जिस सफेदी को आप साफ सफाई समझकर भरोसा करती हैं, क्या आपको पता है उसे सफेद बनाने के लिए फैक्ट्री में क्या खेल खेला जाता है? क्या वो जेल जो जादू की तरह सोख लेता है सुरक्षित है, या फिर वो सिलिका है जो आपको बीमार कर रही है? अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहते, तो अगले कुछ मिनट अपनी आंखें खुली रखिएगा। और फैक्ट्री का वो सच जानने के लिए जिसे कोई नहीं दिखाता, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मशीन चालू करते हैं। This isn't the cotton we started with. No, this is the industrial cellulose pulp we Process here. Our process ensures the highest quality cellulose, tracked every step of the way, from the forest to the final bale. Reverse. Retaining significantly more volume. Purity levels are consistently high across all samples. Confirmed. Brightness readings are also well within tolerance. Temperature remains stable at 95. The brightness is increasing as expected. Confirmed. Safety protocols are fully engaged. This data confirm the stability, but I want eyes on every signature. We've audited the batch logs twice already. And we will audit them again. Safety is paramount. This diagram shows the structured sandwich composition. We start with the fluid transfer layer, followed by the highly absorbent core. The tensile strength here is exceeding the baseline. Yes, the fiber distribution looks optimal. Models. The powerful inspection lighting reveal the intricate network of pores. As the airflow passes through, the sensors confirm. Check the caliper readings on screen 3. Looks optimized. We are well within tolerance. The tensile strength is well within the parameters. And the thickness is consistent across the sample. We are maintaining a steady flow rate through the sample. The data confirms excellent breathability and structural integrity.
Response time confirmed. Accurate diversion. Noted. Test successful. तो दोस्तों, ये था कच्ची लुगदी सेकर एक सुरक्षित सैनिटरी पैड बनने का सफर। हाँ, सस्ते और लोकल ब्रांड्स में खराब क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल हो सकता है जो रेशेस का कारण बनता है। इसलिए हमेशा अच्छे ब्रांड और सही जानकारी पर भरोसा करें। पैड में जहर नहीं है, लेकिन इसे 4-6 घंटे में न बदलना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। फैक्ट्री का सच यही है, डरिए मत, बस जागरूक रहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपका डर थोड़ा कम हुआ? कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार हम किस चीज का पर्दाफाश करें, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक या कुछ और? आप हुक्म कीजिए, हम एक मध्यम आयु वर्ग के अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष कैमरा पर्सन को लेकर पहुंच जाएंगे। जाते जाते वीडियो को शेयर करना न भूलें, शायद ये जानकारी किसी की सेहत बचा ले। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।